अच्छा जी। जी, जनाब अमित साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसे हैं आप? I am good, Mr. Raja. Thanks for inviting me over here. ऐसा प्लेजर। आप उर्दू आप बोलते हैं, समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? थोड़ी बहुत ही समझ में आ जाती है। या आप तो इतने फ्लो से बोल रहे हैं यार। आप तो मेरी तरह बोल रहे हैं बिल्कुल। चले, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। अच्छा, मुझे बताया गया था हमारे जो न्यूट्रल हमारे जो दोस्त हैं, या मुझे कहना चाहिए म्यूचुअल दोस्त हैं हमारे जो, उन्होंने बताया था कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, और आप बात करना चाहते हैं गॉड्स एग्जिस्टेंस पे। बल्कि बेहतर है कि आप खुद कहें, ताकि मैं कुछ मैं गलती ना कह दूं कुछ कहने में। फरमाइए। नहीं नहीं, आई वॉज जस्ट श्योर कि भाई आपसे मिलना है, बातें करनी है ऑनलाइन। जरूर द जरूर। टॉपिक वाज कि हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। जी जी। तो आई एम ओपन टू डिस्कशन एज एंड हाउ इट प्रोसीड्स लाइक। जी जी, बिल्कुल सही है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप जैन हैं, तो आई इमेजिन कि आपकी एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, राइट? हम्म। थोड़ा आप उसका एक ब्रीफ एक स्नैपशॉट दे देंगे, उसकी समरी क्या है? Well, Jainism is a religion which says there is no creator God, as is often believed to be the primary feature behind God. Sure. But many people that for that reason confuse it as an atheist religion. But this is not a case. Jainism is Sure. not an atheistic religion, it's a very, very theistic religion. But it's just that the concept of God in Jainism is different from what we find in Abrahamic religions and in Vedic religion in general. ओके, फेयर इनफ। तो आपकी जो योर एक्सप्लेनेशन जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, आप ये समझते हैं कि उसके लिए सेपरेट सिस्टम है, सेपरेट लॉज हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रिएटर? Correct, yeah. That's what Jainism claims to be. ओके, और इस क्लेम की बेसिस क्या है? Well, किसी भी थियोलॉजी का क्लेम का बेसिस नहीं होता. जस्ट एज थियोस्टिक रिलीजन बोलते हैं कि देयर इज अ गॉड एंड देन एट वन फाइन डे ही सेड लेट देयर बी लाइट and the या world was created. So there's no, I mean, this is a fundamental principle of a religion. या And Jainism says that there's no such thing like there's no creator God as is, neither a preserver God or a destroyer God as primarily our Hindu cousins believe like. जी जी। Yeah. So, तो जैसे भी आपने कहा कि देयर इज अ बिब्लिकल व्यू, उसके साथ साथ ऑब्वियसली कुरानिक व्यू है और व्यूज हैं। तो वेदर यू एक्सेप्ट दोस बेसिस एज द ट्रूथ और यू डोंट, लेकिन एट लीस्ट एक फाउंडेशन है जहां से ये फेथ डेवलप होता है कि लेट देयर बी अ लाइट। सो दैट्स बाइबल, सो दैट्स फाउंडेशन, दैट्स अ बेस। आप उसे correct. एक्सेप्ट करें या ना करें, वो एक और चीज है, पर एटलीस्ट द बेस इज देयर। लेकिन जब जैनिज्म में हम ये कहते हैं कि देयर इज नो क्रिएटर बट वी आर स्टिल थियस्टिक पीपल, तो इस क्लेम की बेस क्या है? The two different things. पहली चीज कि there is no creator, उसका एक अलग टॉपिक बन जाता है. And then we say that we are not atheistic, उसका अलग क्लेम बन जाता है. We are not atheistic because we believe in existence of soul ओके। and transmigration of soul. So there's a लेकिन वो तो आपको बहुत से एथियस्ट भी मिल जाएंगे जो ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि एथियज्म में ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक है पॉपुलर लेवल एथियज्म और एक है इंटेलेक्चुअल लेवल एथियज्म, जिसमें correct. फिलोसफर्स, आपको बहुत से फिलोसफर्स मिलेंगे जो एक्चुअली सुपरनेचुरल को भी डिनाई नहीं करते, सोल को भी डिनाई नहीं करते। आई हाँ मीन हाँ. वो एक्सेप्ट करते हैं विद डिफरेंट नेम्स, बट दे बिलीव यस देयर इज समथिंग, एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट, बिकॉज फिलोसफी में जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, वो रिजोल्व नहीं होता विदाउट एक्सेप्टिंग कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, देयर इज समथिंग मेटाफिजिकल दैट गिव्स अस, यू नो, Correct, गिव yeah. मेक अस व्हाट वी आर। लेकिन अगेन देयर इज अ रैशनल बेस देयर, बट प्रॉब्लम विद दैट इज कि चूंकि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, देयरफॉर दो एथियस्ट एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं। तो अगर आपका जैनिज्म में अगर कोई बेस नहीं है इस क्लेम की कि देयर इज नो क्रिएटर, तो फिर दो जैन आपस में डिसएग्री क्यों नहीं कर सकते, गिवन द फैक्ट कि आपके इस क्लेम की कोई बेस नहीं है? नहीं,
क्लेम का ऐसा नहीं है कि बेस नहीं है. इट इज अ बिलीव दैट लाइक इज अ फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म. It doesn't say that the time for Jainism is eternal. And because time is eternal, so everything is eternal. This universe Okay. itself is eternal. It moves Sure. in cycles. So there's no starting point of it, no ending point of it. Sure. The logic that जी please yeah, carry please. on कीजिए. The logic which is given behind is with an example of a circle. If you put your pen at any point in a circle, the number of dots behind that the point which you have fixed your pen at would be same as the number of dots which are ahead of it. ठीक है. So when तो आपकी anything, yeah. Sorry for interruption there. तो basically आपने एक rational argument दिया है just as we draw a circle. But इससे मैं क्या ये बात मैं infer कर सकता हूँ कि आपका ये claim और these are audacious claims that there is no creator. और बाकी भी जो आपने claims किए हैं, तो इसकी अगर कोई scripture बेस्ड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसकी बेस पर आप कह सकते हैं कि हमने रैशनली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ये रिजल्ट हमने डिड्यूस किया है. There is a scripture base to it. There is a scriptural base to it, yeah, because that Jan Annals, I mean, this is not something which comes out of the blue. The Jan Annals, just like in Biblic religion, there's a at particular point of time, let there be light created the universe. So that's a Biblic base of the Abrahamic Christian belief. So सही. that's in the same way for the Jain belief of being there no creator God. The belief is that this universe is a result of 6 eternal substances which interplay with each other, and they have been doing that since eternity, and they'll be continue to do that for forever. So there's no starting point of it, no ending point of it. These 6 eternal substances, just as in Abrahamic religions, we say God is eternal. He's not begotten. There's no birth of it. There's no father of it. There's no point where God was born. So a base is that God is eternal. That godliness in Jainism is like subdivided into 6 eternal substances, which collectively. And none of these are created. None of these are creator. They are all 6 eternal substances that has been playing and interacting with each other, which makes universe a possibility. And who set the rules of them interplaying and resulting the universe and everything else that exists within the universe? There is no rule. They all these 6 eternal substances have their intrinsic properties. They maintain their intrinsic properties, and like they interact with each other, giving space to each other. This interplay creates a universe. Sure, I understand the claim. बस उस claim को मैं deconstruct करना चाह रहा हूँ. Yeah, sure. कि वो उनकी ये intrinsic properties हैं, वो intrinsic properties कहाँ से आएंगी? उनकी property है intrinsic. Just as one of the thing is like, say for example, space. Space in Hindi we call it akasha. Yeah. The space is uski intrinsic property that it gives place for other things to play around. So that's it. I understand that, but obviously the space itself. Yeah. What we understand is that space जो है, it's part of the universe. Universe is expanding. Yeah. Obviously, it is expanding into something, which means that the space itself has to be contained within the universe, and it is essential for the universe to exist. The universe has to be contained within space. You've got that. That's a different space. ये जो आगे मैंने बात कही कि नहीं जो आगे मैंने बात कही, the universe is expanding. Obviously, it is expanding into something, right? So into something, correct. So space is one of those eternal substances which has been there since eternity. मैं आपकी बात समझ गया. लेकिन जो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो स्पेस इस वक्त जो यूनिवर्स के अंदर स्पेस है, that gives not reason, it gives further, so to speak, space कि वो बाकी चीजें उसमें इंटरेक्ट कर सके, राइट? मिसाल के तौर पे जो celestial bodies and so forth, ये तो सारी की सारी उस स्पेस में है जो इस यूनिवर्स के अंदर है. But the question is
कि आप जब ये कहते हैं कि इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं और आप ये कहते हैं कि दे आर जस्ट देयर इटर्नल, यू सी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और उसके पास अपने एग्जिस्टेंस की कोई रीजन नहीं है, देन इट नेसेसरली फॉलोज कि किसी न किसी चीज ने उसको बनाया हुआ होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास let me throw a couple of examples. Let me throw a couple of examples just to make the point, right? जैसे हमारे पास चेयर है, टेबल है, आप एक माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, आपके पीछे एक गिटार है. None of these things have any reason to exist. Intrinsically they don't. This is how we know that somebody who had the reason to create them to satisfy a particular purpose, to meet a particular purpose, तो उसको फिर उन्होंने डिजाइन किया, इंजीनियर किया, and that is how they came into existence. ये जो आप बता रहे हैं कि 6 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो इंटरप्ले कर रही हैं, क्या इन फोर्सेस के एग्जिस्ट करने की कोई इंट्रिंसिक इंटरनल रीजन है? Let me just put this question in another perspective, back to Abrahamic religions or other religions of the world, which talks about God being eternal. Right? Can this question be asked that why is God eternal? What is the reason behind his being eternal? Why does he exist at the first place? So when you can, but you see the problem with that is कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो सवाल somewhat difficult हो, तो उसका जवाब ये नहीं होता कि तुम्हारा भी तो खुदा का तस्वर ऐसा ही है. You ask me this question independent. मैं इसलिए नहीं बोल रहा. If I can complete. अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या खुदा इटर्नल है, वो कैसे है, श्योर, आई एम वेरी हैप्पी टू गो इनटू द लेंथ ऑफ इट. हमें फिलॉसफी में, थियोलॉजी में, फिलॉसफी में इतने डीप लेवल पे हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि वी हैव नो प्रॉब्लम डिस्कसिंग इट. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 6 फंडामेंटल फोर्सेस आप बता रहे हैं, इनकी कोई रीजन है कि ये खुद ब खुद ये एग्जिस्ट करें? अगर नहीं है, then philosophically there is no other explanation apart from one, and that is कि इनको किसी और ने क्रिएट किया है. What is your response to this? इसको सर आप इस तरह समझिए. When we talk about universe, Jainism says that it is a product of interplay of 6 eternal substances that has existed forever. Now, when we say that, to get an answer to your question, we need to get into these 6 fundamental substances in the first place. Okay. Because unless we go into these substances, this question cannot be answered. I gave you one example of space. We know space exists. Even today, when scientists talk about the expanding universe, they say that space is infinite. There is no end to space. Correct? Okay. It has been expanding for the last 12.5 billion years, and the universe is still expanding into something like we just discussed. And the whatsoever place it's expanding into is the reason why it exists. Space exists because it has to provide place for the universe to exist. So that is the reason behind space exists. And that's the reason it is infinite. That's the reason it's eternal. Because unless space would be there, the universe is not possible. इस पे हम separately हम बहुत बात कर सकते हैं कि what is the nature of space. We can have a good conversation, but that's not the question I asked. मेरा सवाल आपसे ये नहीं था. मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 6 fundamental forces की क्या reason है for existence? What is the reason there? अगर उनके पास कोई internal reason नहीं है exist करने की, then someone has to आपकी space का भी argument, philosophically speaking, it can be addressed in one sentence. अगर space के पास भी कोई reason नहीं है खुद को उसकी एग्जिस्टेंस की, then it necessarily follows कि उसको किसी ने क्रिएट किया हुआ होगा. But that is not the argument we are having. हम फोकस करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली जो आपने कहा कि 6 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और वो इटर्नल हैं. Do you know if they have any reason to exist? If the answer is no, then why do they exist? Because someone must have created them. So if you go into philosophical reason, then I just answer space exists because it is important for this, because for universe to be a possibility, space has to be there. Unless there is space, the universe. What about? Sorry for interruption की मैं माफी चाहता हूँ. Space ठीक है, आपने बता दी. मैं आपसे ये 6 fundamental forces के बारे में पूछ रहा हूँ. Space is one of those fundamental substances. Space is one of these 6 fundamental
elements that are considered as eternal in Jainism. ठीक So है. space is one of it. Space is one of them, So but there are space is one 5 of others. them. और उन 5 There में are से 5 एक जो others. है, Yeah. और उनमें 5 एक ऐसी है जो 5 में से एक और ऐसी है जो बाकी 5 को बेसिकली इनेबल करती है, so they can have the interplay, right? No, Am I every fairly close 6 to of that? no. Every 6 of these forces enable the balanced 5 forces to coexist with each other. So there is no difference कि एक उनमें से बेहतर है और बाकी नहीं है. हाँ, ना, कोई बेहतर नहीं है, कोई कुछ नहीं. They are all eternal and they have been there since eternity. They don't do anything on their own. I mean, say for example, time is one more of these 6 elements that we talk about in Jainism. So space doesn't control time. Time doesn't control space. Okay. Space gives place. Space gives the area for the universe to play around, and Okay. time is yeah. Amit, sorry, it's very interesting. It's very philosophical. लेकिन मैं specifically मैं deconstruct करना चाहता हूँ आपके इस claim को कि ये 6 fundamental forces हैं. But what you say is कि ये वो 6 fundamental forces हैं. And now listen to this because this is really interesting. कि 1-2 forces नहीं है, एक नहीं है, 6 हैं, और 6 की 6 आपस में इकट्ठे काम कर रही हैं. और किसी के पास कोई रीजन नहीं है कि वो दूसरे के साथ कोऑपरेट करे इंडिपेंडेंटली, लेकिन वो फिर भी कोऑपरेट कर रही है. और वो कोऑपरेट इस तरह से कर रही हैं कि उसकी वजह से यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है. करेक्ट, यू कैन से दैट. नाउ द क्वेश्चन कि अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट करना सीज कर दे फॉर व्हाट एवर रीजन, इन 6 फंडामेंटल फोर्सेस का क्या बनेगा? So, as per Jainism, Jain philosophy, there would never be a time when universe ceases to be. And just remember. Entertain me hypothetically. Even hypothetically, it's not something which is possible because that's the very foundation of the Jain concept of universe being eternal. Yeah. Okay. Because if there was a starting point of it, then there has to be ending point of it as well. There has been no starting point of it. Okay, look, if I can put it this way to you, कि let us say कि एक मशीन है, उस मशीन के अंदर एक पुर्जा है, एक पार्ट है जो कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है. तो अगर वो पार्ट नहीं रहता तो वो मशीन नहीं रहती. लेकिन अगर वो मशीन खराब हो जाती है तो उस पार्ट की भी अब कोई अहमियत खत्म हो जाती है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं रहती. Right? The part is just get thrown away. So I understand कि आप कह रहे हैं कि जैनिज्म में ये पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स की एंडिंग हो जाए. But I need you to dig a little bit deeper. And hypothetically, कि अगर universe exists, let us say कि there is an alternative reality in which there is no universe. तो क्या ये 6 powers, 6 fundamental realities, क्या ये फिर भी exist करेंगी कि इनके exist करने की कोई reason होगी? ये 6 fundamentals हमेशा exist करेंगे. And because they have been interplaying with each other, तो उनका जो product है, this universe will also always remain as it is. Wow. Now, one thing that must be understood, sir, over here, and this is very important. When Jainism says that universe is eternal, it doesn't mean that our solar system is eternal, or our galaxy is eternal, or our sun, moon, and stars are eternal. No. Sahi. All these things had a point when they were born in the first place. All these things have a life. And there will be a time when this probably solar system or a sun is going to be finished. But when we say universe is eternal, sure, I understand. मैं intervene कर रहा हूँ कि अब हमने उसी चीज को रिपीट करना शुरू कर दिया ना, तो I just want to move on. मैं सिर्फ आपसे समरी में ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या इन 6 फंडामेंटल फोर्सेस के एग्जिस्ट करने की कोई इंटरनल वजह है, और आपका जवाब है कि they are just there. Am I right to say? यानी कोई उनके पास रीजन नहीं है एग्जिस्ट करने की, and your belief is कि they are just there, and you have no reason, no rational reason to accept that they are just there, right? No, if you want to go into rational, this is a fundamental that Jainism claims it is. But if you say rational reason, then I just answered that there's a rational reason behind space to exist is that offers the place for the other 5 elements to exist. Same way, the reason for time to exist is that it offers
time span for these other balanced 5 elements to change their form, to change their structure, to I move understand around. कि आप So उनकी जो performance the reason for any of these existence is because other 5 elements could play around. नहीं Is the हमें reason for the 6th element to coexist. देखें हमें डिफिकल्टी ये हो रही है कि मैं इनकी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं, आप उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसके पीछे की रीजनिंग जानना चाह रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है तो करती क्यों है। That is the nature of existence. हाँ, That's that's exactly what I it said. exists. The space exists so that the balanced 5 elements could exist in this universe. So that is the reason Okay. why space exists. So universe is eternal then? What is that what you're saying? That's what Jainism claims, sir. The universe is eternal. Okay, here is the problem now. हाँ, अगर ये 6 fundamental forces exist न करें तो यूनिवर्स भी exist नहीं करेगा। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो भी यूनिवर्स नहीं होगा, which means कि यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए इन फंडामेंटल 6 फोर्सेस का यूनिवर्स को प्रोसीड करना जरूरी है। करेक्ट। प्रोसीड नहीं, वर्ड इज अ रॉन्ग, प्रोसीड इज अ रॉन्ग वर्ड। फिर बहुत बड़ा, अगर प्रोसीड नहीं करें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, प्रोसीड इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज ओवर हियर। प्रोसीड का मतलब है कि पहले वो आया बाद में यूनिवर्स आया। हाँ, क्योंकि ये एक लॉजिकल That's what I'm saying. No, that's what I'm saying. मैं आपको मौका दूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लॉजिकल नेसेसिटी है कि जो चीज किसी चीज अगर बी की एग्जिस्टेंस ए पे है, देन इट नेसेसरली फॉलो कि ए पहले हो। सो अगर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है इन 6 फंडामेंटल फोर्सेस पे, तो इनका पहले होना जरूरी है। अगर ये पहले नहीं होंगी तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स is eternal and these 6 fundamental forces are eternal with it. प्रॉब्लम इसमें आपको ये हो जाएगा कि अगर ये सारे के सारी चीजें साथ ही स्टार्ट हुई हैं तो फिर उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, विच मींस कि वो इटर्नल नहीं है। और अगर वो इटर्नल ही हैं तो ये कैसे हो गया कि एक यूनिवर्स जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इन 6 को छोड़े किसी एक को भी खत्म करे तो नहीं कर सकता, और ये सारे के सारे इकट्ठे ही स्टार्ट हो गए? दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, सर। Let us put it this way. Look, unless you get into the fundamentals, the details of these 6 substances, you will not be able to understand how they coexist and how they can coexist together at the same point of time. I gave you example of space. I specifically gave you example of space because it is one of these things that can be very easily and very rationally understood. Because, unless there is space, there can be nothing. Even if you say from a Abrahamic point of view, we say God existed before this universe. But then you ask a question, where did God exist? God cannot exist in nowhere, correct? God has to exist somewhere if he has to exist. So if God has to exist, well, let me just complete it. नहीं, आपको गलतफहमी नहीं है, is another thing altogether. What I'm saying is that when we say God is eternal, God has always been there. So, but where has he been? So there has to be some space where he had to be. Correct? Okay. And if he has to be in some place, then that space also becomes eternal like God in the first place. Achha. Getting my point? Okay. मैं रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहा कि आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। I don't agree with what you say, but please carry on. Yeah. So that is, that's how we try and logically understand how could these 6 substances be eternal at the first place. Just as God can be eternal, same way, how can these 6 substances be eternal at the same place? But then, so when we relate it with God, that is fundamentally supposed to be eternal, then we can logically conclude that how these 6 substances could be eternal as well. Okay. All right. So the reason, the logic, you see, आपकी इस बात में जो लॉजिक की कमी मुझे नजर आती है, and I say this with respect, वो ये है कि अगर आपका ये आर्गुमेंट है कि जैसे गॉड इटर्नल हो सकता है, एब्राहमिक इंटरप्रिटेशन गॉड की जो है, अगर वो इटर्नल हो सकता है तो ये 6 भी हो सकती हैं। नहीं, मैं ये नहीं, this logically can be concluded, but not reasonably.
Okay. When we say with the reason, with the logic, then I mean, Jainism doesn't believe in any creator God. So when I'm But these, using God as an Abrahamic concept of God to explain how these six substances could be eternal, the reason only is that you could correlate things with the point of view that you fundamentally believe in the first place. okay. So My when you only say कि ना ठीक है, मैं yes. आपकी बात समझ गया, पर यू सी जिस चीज को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं वो ये है कि अगर इनके पास कोई इंटरनल रीजन नहीं है एग्जिस्ट करने की, देन इट इज ए नेसेसिटी कि इन सिक्स फोर्सेस को किसी ने क्रिएट किया हुआ होगा, एंड नहीं, विदाउट ए क्रिएटर ये इतनी ज्यादा वीक प्रोपोजिशन है कि मैं आपको सातवीं फोर्स अभी बताने को तैयार हूं. हाँ बताइए, अपने छेदा आपने समझी नहीं, कौन सी साथी कैसे बताएंगे? हाँ, मैं सातवीं में आपको इस तरह से बताऊंगा कि ये जो 6 का इंटरप्ले है, द वेरी फैक्ट दैट दे हैव अ सिस्टम ऑफ इंटरप्ले, वो सिस्टम बजाते खुद सातवीं फोर्स है. डू यू गेट माय पॉइंट? Without that system, they cannot interact with one another. They cannot have the interplay. Why So there has to not? be something in between, right? Tell me, that's the reason. That's the whole difference between our Vedic philosophy and Jain philosophy. The मैं उसमें Vedic नहीं, philosophy, like Abrahamic philosophy, says that there's a preserver God. मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ आ गई है. But let me try again. कि ये आइडिया इतना वीक है कि अगर आप इसमें इस तरह से ऐड करते रहेंगे तो 6 के सातवीं तो मैंने भी ऐड कर दी, और आप इसको लॉजिकली रिफ्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये एम्पिरिकल नहीं है, राइट? ये प्योरली हम रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं, और रैशनली आप इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, लॉजिकली रिफ्यूट नहीं कर सकते कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन दीज फोर्सेस, some kind of system of communication between these forces. Therefore that system has to be the seventh force, and that has to exist eternal, that has to be eternal as well. अब इसमें कोई आदमी 8वीं भी ऐड कर सकता है, 9वीं भी ऐड कर सकता है, 10वीं भी ऐड कर सकता है. So where do you draw the line? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये सेटल प्रोपोजिशन है फिलॉसफी में, कि जब किसी चीज के पास कोई अपनी रीजन नहीं होती एग्जिस्ट करने की, तो वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड होता है. देयर आर सम मैथमेटिकल एक्सेप्शंस टू इट, ग्रांटेड, लेकिन even those exceptions don't help you. The reason they don't help you is कि you know कि हमारी जो कैलकुलेशन है यूनिवर्स की, it is mathematical, right? It is much of physics is involved in there. So now we are going into another problem कि अगर ये 6 fundamental forces इनको आप कह रहे हैं, अगर ये physics को employ करते हुए इन्होंने यूनिवर्स को sustain किया हुआ है, then the physics has to come after these fundamental forces because they have created physics. That itself is not the problem. Problem इसके बाद आता है, और वो ये है कि अगर उन फिजिकल लॉज पे यूनिवर्स खड़ा हुआ है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि वो यूनिवर्स और फिजिक्स दोनों इकट्ठे ही टाइम पे आए हुए, एक ही टाइम पे वो एग्जिस्टेंस में आए हुए हों, क्योंकि देयर हैज टू बी अ सिस्टम टू होल्ड द यूनिवर्स. तो अगर फिजिक्स प्रिसीड करती है तो फिर यूनिवर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा. अगर यूनिवर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स इटर्नल नहीं है. आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स और ये सारी की सारी फोर्सेस इटर्नल हैं, तो अगर यूनिवर्स इटर्नल नहीं है, व्हिच मींस कि सारी की सारी फोर्सेस भी इटर्नल नहीं है. हाउ डू यू रिस्पोंड टू दैट? No, you are just, I mean, moving in a circle, sir. You're coming back to the same point again and again. Try. Let me explain to you, sir. Sure. I gave you example of space. I think that is a very reasonable understanding that I'm using here God as a creator God or as an eternal God only as a reference point to explain other things. If God is eternal, he has been there since eternity. There's no point when God was not there. There won't be a point when God won't be there. He was, he is, and he will be. Correct? Sure. Again, I'm using it from a reference point of view to explain things around. Now, similarly, for this God to always be present, he has to have a place where he has to be present. So that place where God has been present since eternity is space. That's what Jainism calls the first of the primary building blocks of this universe, because of which universe exists. Because there is space. Without space, universe cannot be possible. Okay. Now, second material that we talk about is Udgal. Pudgal is a combination of two words, Pud and Gal. Pud means
this word Pudgal itself represents what this particular material is all about. Pud means Okay. something which comes together, fuses in to create new products. Gal is ठीक something which exhibits the property of fission, breaking up. So ठीक Pudgal is something which is defined in Jainism as something that exhibits the property of fusion and fission. And that today we know is matter. This matter has been eternal too. Now, when we say that whenever God created this universe, if you speak to an atheist, I mean, which you often do, which I'm getting a point from little time I have been spending with you on this YouTube channel, then the first argument they say is that where did he got the raw material to create the universe? Now, if the logic is that God created raw material first and then he created universe, then the answer is that where did he got the raw material to create the raw material in the first place? Okay. So what Jain philosophy says that this Pudgal is the raw material that has always been there. You can call that basic building block of the universe, the atom. Sure. They fuses together to create various elements. They merge in together to create sun, moon, and stars and the universe. Then they break apart to create something new. This cycle सही of creation destruction continues and has been continuing since eternity. So that is the second point that Jainism claims is eternal, which is the raw material itself, which is required to create because of which this universe has been existed. The stardust is the basic building block, the proton, neutrons, and electrons, ठीक which fuses in together to create new elements, which fishes over to create new elements again. ठीक They just keep changing form, but they never ever destroy. And then the third basic building block is time, which Jainism talks about. Now again, Yeah. if we look at it from the concept of a creator God, then the reason that can be easily given is that when we say, I mean, from Abrahamic point of view, from Christian point of view, when they say, let there be light, whenever God said, let there be light. So there would have been at some point of time where he would have said, let there be light. But he has been eternal, right? He had existed before he desired us, before he said that let there be light. So there was a time before the creation of this universe, right? Where only God existed. And probably space existed. So that time also existed, because there was a time before the creation when God existed. So time also existed by then. Sure. So time becomes eternal as well. That's the third thing which Jainism claims is eternal. सही Am I able to explain things around, sir? यार ये जबरदस्त. मैं आपकी बात को मैंने बड़े गौर से सुना, आपको इंटरप्ट नहीं किया, एंड आई होप कि आप यही कर्टसी मुझको भी एक्सटेंड करेंगे. Of इससे course, पहले my मैं pleasure, sir. My pleasure. My pleasure. अच्छा, इससे पहले मैं उख्ती अलैना अली को वेलकम करना चाहूंगा. उख्ती, वेलकम ऑन बोर्ड. जी स्टार्ट कर दीजिए. जी अच्छा. अच्छा, अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसकी माजरत, उसकी माफी. द्रव्य एक एलिमेंट है. Dravya is not a Dravya. I mean, elements are called as Dravyas in Jainism. अच्छा, ठीक है. Dravya is no element per se, but But elements. I'm interested in a particular one, जिसको आप जीवा, जिंदा या कहते हैं कि जो sentient है basically. There is one, correct, right? yeah, correct, yeah. But there is only one which is sentient. No. Other five are not. No. Yeah, among these 6 building blocks is just one element which has sentience, which is Jiva, Right. that we call soul. Sure. अब you see यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है. हाँ. अगर ये सेंटियंस है, एक है और बाकी 5 सेंटियंट नहीं है, दैट मीन्स कि अगर वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरप्ले से यूनिवर्स को सस्टेन किया गया है, दैट मीन्स कि वो किसी न किसी एक एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं. वो खुद सोच नहीं. Not necessarily. What is the difference between being sentient and non-sentient then? Tell me. The meaning. The difference between sentience and non-sentience is. It's your claim. No. या आपका claim है, मेरा नहीं है. No. Sir, two things.
other difference between sentience and non-sentience is only that sentience has the ability to feel and perceive things around. Sure. If तो if ये I उसके अलावा if I आप ये if अच्छा I there is only this difference. Sentience can perceive, can feel things. Non-sentient doesn't have this capability of perception. They can't it feel doesn't. things. They can't feel things. Yeah, they doesn't. The space Okay. doesn't feel. The time doesn't feel. The pudgal, the matter doesn't feel anything. अच्छा, तो So ये जो एक जो balance फील to करता है, जो एक जो है वो right? जो फील करता है, Mm-hmm. उस एलिमेंट को क्या क्या कहते हैं आप उसे? Jiva, जीवा, jeev. जीवा कहते हैं, You can सोल, call it राइट? soul. You can call it soul. सोल, Yeah. क्या आप उसे जीवा कहते हैं? फेयर एनफ, चलिए हम उसे जीवा कहते हैं। हाउ डू यू Mm-hmm. नो कि जीवा एक्चुअली सेंटिएंस है और बाकी 5 नहीं है? How do we know? Baki panch sentience. So that's a claim of Jainism. That आई is the अंडरस्टैंड, बट fundamental हाउ of डू यू नो? Jainism. We know by today by modern science that even if we take off our body, if we take our body या when it's alive, it has the possibility of perceiving things. Even if श्योर, I prick a needle, even if I prick a needle in my body, I feel I have been pinched, right? ओके, But when a person dies, that perception goes with it. ओके, Then even if you like cut the body into pieces, it won't react. So that is how we know that as long as jiva has existed in this body ओके, feels sentience. So the sentience is because of the presence of soul in the body. आई Once the गेट इट soul कि leaves, सोल अगर हो, once the soul leaves the body is non-sentient. I mean, that's not the question I asked. I understand कि सोल हो तो क्या फर्क होता है, ना हो तो क्या फर्क होता है। मेरा सवाल ये Correct, है कि yeah. हाउ डू यू नो कि एक जीवा जो सेंटिएंट है और बाकी नहीं है? That is I know how soul that is works, but how do you know the others don't correct. have the soul? Our existence is a product of mixture of pudgal, matter, and jiva, soul. Yeah. It's a combination of matter, which is made of mud, that's our body, Yeah. and existence of a soul inside body, which makes it sentience. Sure. But what about the There's other a 5? beautiful, And I there's a know beautiful, how soul works. But what about the other 5? How do you specifically know कि उनमें soul नहीं है? other 4, not 5. Jiva is one, Pudgal is another. So we just discussed that Pudgal cannot feel anything as long as How it's do not you associated with Jiva. how do you know that? How? आप इतना बड़ा claim कर रहे हैं, उसकी कोई basis होगी ना? I gave you the example that this body, our very existence is a mixture of body made of mud and soul, रूह जिसको हम बोलते हैं उर्दू के अंदर, Sure. that comes from God. So when these देखिए, two things हम दो merge religions together, Amit, there is no harm right here. हम दो लोग ऐसे हैं जो रिलीजन्स को मानते हैं। मुझसे आप इस्लाम के बारे में बहुत सी चीजें पूछेंगे, मेरे पास रैशनल आर्गुमेंट नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये मेरा ईमान है। वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट। हम उन इवोल्यूशनिस्ट की तरह नहीं है जिनके पास आर्गुमेंट नहीं होता तो फिर भी कहते हैं नहीं ये साइंस है। हमारे पास आर्गुमेंट नहीं होता तो हम कहते हैं लुक, इट्स आवर फेथ, इट्स आवर बिलीफ। आप भी एक रिलीजन को मानने वाले हैं, आपके पास अगर इस चीज का कोई रैशनल आर्गुमेंट नहीं है, जवाब नहीं है कि बाकी 5 को आप क्यों ऐसा कहते हैं, आप कह सकते हैं लुक, दैट्स आवर फेथ, दैट्स परफेक्टली। the first thing I said was this is the fundamental of Jainism. That's what Jainism claims. Now, if you go into the reasoning of it, the rationale of it, then the rationale I'm giving behind Pudgal not having sentience is because when the soul leaves the body becomes non-responsive. Because without a soul, the body is only Pudgal, made of matter, made of mud. So you ask Sure, me I the get it. reason. So I'm giving you the reason behind it. The fundamental is always there. Iman, faith is इसको always there. But beautiful thing about Jainism is that we are not supposed to believe into something just because our religious books or religious masters says something about it. does that include that there Having are 6 fundamental forces? this includes the 6 fundamental forces. That's the reason we are supposed to intellectually understand why does this exist in the first place. Hold I on, gave sir. you an example. There Yeah. are 6 fundamental forces and they are eternal. Yeah. Apart from your book,
what is the other source of information you have जिसकी बेस पे आप ये यकीन रखते हैं कि ये 6 fundamental forces eternal This हैं? is empirical understanding of things. जैसे मैंने अभी पुद्गल का और रूह का बताया, रूह निकल गई बॉडी से, बॉडी रह गई, वो पुद्गल रह गया. वो सेंटियंस नहीं है. वो सेंटियंस क्यों नहीं है आपने पूछा, तो सेंटियंस इसलिए नहीं है वो क्योंकि अब उसको आप काट पीट भी लो, जला भी दो, दफना भी दो, वो वैसी की वैसी रहेगी, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी. सो दैट इज द रीजन वी. आप ये कह रहे हैं कि एम्पिरिकली आप इस चीज को मानते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएटर कोई नहीं है और यूनिवर्स इटर्नल है. और अगर आई मीन दीज स्टेटमेंट्स आर फुल ऑफ फैलेसीज अगर आप इसको गौर से अगर आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस देखिए मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं है. गॉड इटर्नल है. Well, Jainism, God जब हम बोलते हैं तो what do you mean? Creator God और you mean Creator God तो Jainism मानता नहीं है. नहीं मानता है. आप किसी गॉड को मानते हैं? हम रूह को मानते हैं, हम आत्मा को मानते हैं. और उसको हम गॉड कह सकते हैं just for a second. We can say that. So because this Atma itself is defined as existence of this Atma is defined in 3 forms. One of this form is Paramatma. Paramatma means God. So आत्मा को गॉड कह सकते हैं, लेकिन हर आत्मा गॉड नहीं होती. लेकिन आत्मा का एक फेस पर आकर जब वो, जिसको हम इस्लाम में बोलते हैं ना, इंसान मुकम्मल या कुतुब, जहाँ जिसमें जो सूफी, अगर आप सूफी इस्लाम को आप पढ़ते हैं, मानते हो अगर, तो उसको बोलते हैं फनाल फना. जहाँ पर everything is finished except for pure existence of soul, that particular existence of soul. When everything else is finished, that is referred to as Paramatma and God. But then that Paramatma is not considered as a creator of the universe. अमित, मैं अपने क्वेश्चन से को साथ में देखिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई चीज मैं बिल्ड कर रहा हूँ थ्रू क्वेश्चंस, तो मैं उसके साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा. लेकिन मैं आमिर भाई को मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ. तशरीफ लाए आमिर भाई, मोस्ट वेलकम सर. अच्छा, जो जज़ाकल्लाह जी आमिर भाई, वालेकुम जज़ाकल्लाह जी कैरी ऑन रखें. कैसे कैरी ऑन जी. अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप किसी गॉड को मानते हैं और वो इटर्नल है, तो आपने कहा यस परमात्मा. यस या परमात्मा वुड बी इटर्नल. Paramatma is eternal, of course, but because universe is also eternal and time is also eternal, so there's no point when Paramatma was born or Paramatma would not be there. Everything is eternal. Everything moves in cycles. No reason. Sure. लेकिन वो परमात्मा जो है, उसका जो रोल है in your theology, that is insignificant, क्योंकि वो यूनिवर्स, 6 fundamental forces, ये सब के सब eternal हैं. So there is nothing special about God. Well, there's something very special about God. And this is empirical. And this is empirical. Well, actually, it is only the soul among all these 6 fundamental forces that is of any concern to this universe. Because this universe. अमित, मैं आपके सवाल पे फॉलो अप कर रहा हूँ. आपने कहा था कि जैनिज्म में हम चीजों को इसलिए नहीं सिर्फ मानते कि बुक्स में लिखा हुआ है, बल्कि एम्पिरिकली मानते हैं. माय क्वेश्चन टू यू इज कि गॉड, यूनिवर्स एंड 6 फंडामेंटल फोर्सेस जिन्होंने यूनिवर्स को सस्टेन किया हुआ है, ये सब के सब इटर्नल हैं, और ये बात आप एम्पिरिकली मानते हैं, नॉट बिकॉज कि आपकी किताब में लिखा हुआ है. करेक्ट, या आई एग्री विद यू. I think there is nothing more to talk about here, क्योंकि आपको पता है कि इटर्नली आप इसमें से एक चीज भी साबित नहीं कर सकते. अभी तो आपको हमने स्पेस, अभी तो मैंने आपको स्पेस का एग्जांपल दिया, अभी मैंने आपको टाइम का एग्जांपल दिया. अब you don't agree to it, then that's another issue altogether. अमित, होल्ड ऑन. हाँ. आपसे जो कन्वर्सेशन है, इसको आप YouTube पे दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि जब भी मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास क्या एविडेंस है इस चीज का कि ये जो 6 फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये इटर्नल हो सकती हैं, गिवन द फैक्ट नो रीजन टू एग्जिस्ट, और आपका आगे से जवाब होता है कि बिकॉज स्पेस एग्जिस्ट देयरफॉर दे एग्जिस्ट. No. Wait. I never said because space exists. I gave I gave you a reference from the example of an eternal God that is generally believed in.
I again and आप again say, आप sir, बार बार जो स्पेस का जो रेफरेंस दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं ना कि बिकॉज स्पेस एग्जिस्ट, और मैंने आपको बताया था कि ये एक सेंटेंस में एड्रेस हो सकता है फिलोसॉफिकली, इज नो प्रॉब्लम। इस स्पेस के पास भी अगर अपनी कोई रीजन नहीं है एग्जिस्ट करने की, इट इज सेटल्ड, इसको किसी ने बनाया है, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग इफ इट हैज नो रीजन टू एग्जिस्ट। आपकी 6 फंडामेंटल फोर्सेस जिन्हें आप कह रहे हैं, अगर दे हैव नो रीजन टू एग्जिस्ट, नेवरदलेस दे डू एग्जिस्ट, इट नेसेसिटेट्स कि किसी ने उनको बनाया है, क्योंकि उनके पास तो अपनी कोई रीजन ही नहीं है एग्जिस्टेंस की। तो इसका जवाब फिर ये नहीं हो सकता कि स्पेस भी तो है ही ना। इसका फिर जवाब आपने फिर डीपर लेवल पे जाके देना होगा। मैटर क्यों एग्जिस्ट करता है? वेल, मैटर के पास अगर कोई रीजन नहीं है एग्जिस्ट करने की, तो किसी ना किसी ने बनाया हुआ होगा। क्या हम ये यकीन रखते हैं? एंड वी हैव सॉल्यूशंस देयर, राइट? अब आप खुद जाके सोचिएगा, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, बहुत सारे लोग पीछे वेट करें। मैं चाहता हूं नहीं कि नहीं, प्लीज आप प्लीज प्लीज, जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो ये कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इन पे आप थोड़ा सा सोच लें कि व्हाट इज मोर प्लॉजिबल, कि 6 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनके पास कोई रीजन नहीं है एग्जिस्ट करने की और उनके इंटरप्ले से यूनिवर्स बना हुआ है, वर्सेस एक क्रिएटर है जो कि इतना ओमनिपोटेंट है, इतना कादिर है वो हर चीज पे, इतना ताकतवर है कि वो आउट ऑफ नथिंग चीजों को क्रिएट कर सकता है, कैन ब्रिंग थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग। एंड दैट इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट एवरीथिंग एग्जिस्ट, बिकॉज हर चीज जो एग्जिस्ट करती है वो डिपेंड करती है किसी न किसी और चीज पे। देयरफॉर देयर हैज टू बी वन क्रिएटर, कोई ना कोई एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए जिस पे ये रूल्स अप्लाई ना करें, अदरवाइज वो भी बाकी चीजों की तरह एक चीज रह जाएगा। विच इज मोर प्लॉजिबल आइडिया, मैं चाहूंगा इस पे आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा फिक्र करें। नेक्स्ट टाइम अब आप आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसी यहीं से बात को हम कैरी ऑन करेंगे। इज दैट फेयर? थैंक यू, as per थैंक you यू अमित, like, बहुत sir. Thank you so much. थैंक यू, नहीं, बहुत थैंक यू जी।